we will start with interrupts in 8085 microprocessor. So, as we are familiar with this word, we did in 11th and little bit here also when I was explaining the stack pointer. That time I used this word interrupt. What is basically interrupt? Interrupt is a signal, you can say, or it is a small program or a small subroutine which is basically used by microprocessor itself and peripherals connected with microprocessor. Why peripherals need interrupt? For communication purpose. Microprocessor is doing its work, and if any peripheral wants service or any work or any communication peripheral wants, then a peripheral can send an interrupt signal to microprocessor, and that time microprocessor will stop its normal work and give the service to that peripheral, and after completion of that service to that peripheral it will return to its main program. So from this diagram you can see that this is main program which is executed by microprocessor. Microprocessor is executing this program right now, let's say, and at this point, see, first state instruction execution is done, second is done. At any instruction, like at this point, some interrupt signal is there from external peripheral. Then what will happen? Main program which is executed by microprocessor, it will stop its normal working. So let's say the address of first location is C001. That address of next location is C002 and C003, or at C005, C004 there is an interrupt. So what will happen? अभी हमने लास्ट टाइम में स्टैक पॉइंटर डिस्कस किया था प्रोग्राम काउंटर is holding these address of our program, means the address of the instruction which we need to execute next. So after execution of this, program counter will move to here. After execution of this, program counter will move here. So when program counter is at this place, then there is an interrupt. So what will happen? That time there is a stack memory. We have already discussed in last class. Stack memory is there. Okay, so stack memory means stack pointer is pointing top of the location. Here it is pointing here, right? So what will happen when the interrupt is there? That this address C004 will store in stack memory. Higher order by first means first it will decrement, it will point here, then C0 will store, then again it will decrement and 04 will store here. So first it will store because it has to come back at this place only. No? So when there is an interrupt, it will store C004. And sometimes you can say okay, whenever there is an interrupt, if it is at this place C004, so what will happen? It will complete this part. It will complete this execution of this instruction or some machine cycle, and then the next address will store here. That is also there. So C005 भी हम कह सकते हैं कि it will store. So after interrupt, after completion of this instruction, then interrupt का जो address है, that is the address which is called ISR, interrupt service routine, where that small program is stored. That is the address of the interrupt. जो ये first address है, program counter will go here. Okay? It will hold this ISR. Sorry, it will hold this ISR address, right? Okay, so whenever there is an interrupt, program counters next executable instruction address will store where in stack memory, and then program counter will get the address of ISR. What is ISR? ISR stands for interrupt service routine, which is basically a program stored for that particular interrupt. अंडरस्टूड. जो भी हम इंटरप्ट सिग्नल आएगा उसका एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर होता है जो कि उस सर्विस को प्रोवाइड करता है. तो इंस्टेड ऑफ अभी प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस यहाँ स्टोर कर दिया विच इज कॉल्ड स्टैक मेमोरी. तो हमने
हमने स्टैक पॉइंटर के टाइम पे भी पढ़ा था कि whenever there is an interrupt, then microprocessor will stop its work. So where it is where it has interrupted, that address will going to store in the stack memory, and program counter will get the address of ISR after execution of ISR. Okay, after giving service to that particular peripheral, it will come back to that again its previous work, or it will come back to its main program by taking the address from stack memory. तो program counter को फिर से ये address मिल जाएगा and it will start work from. Okay, so whenever there is an interrupt, understood interrupt का जो concept है, whenever there is an interrupt, so that program counter value or the next executable instruction address, see it is pointing here, means that address, that is C005, that will going to store where in the stack memory. C0 higher order byte होता है और ये lower order byte. दो byte का address है 16 bit. तो ये higher order byte और ये lower order byte. तो higher order byte will go first in the stack memory, then it will decrement, and then lower order byte will go. And then program counter will get the address of this ISR. After execution of this ISR, program counter will take again that address from stack and start execution from this part. So this is basic concept कि जब interrupt होता है तो microprocessor कैसे उसको हैंडल करता है. तो माइक्रोप्रोसेसर कुछ भी अपना काम कर रहा होता है तो it will stop its normal execution, give service to that particular interrupt, and after giving service to that interrupt, that peripheral, it will come back to its main program. So that is the concept or the basic, you can say, definition or introduction of interrupt. Understood? अब 8085 में कितने interrupts रहते हैं? 8085 में we have two types of interrupts. We have hardware interrupts and we have software interrupts. Hardware interrupts is basically initiated by external peripheral. Hardware interrupts are initiated by external peripheral. When external peripheral wants to communicate, they will send signal. So hardware, why it is called hardware? Because it is available in the on the pins of 8085 microprocessor IC. अब IC में कितने पिन है हमारे 40 pins. तो 5 pins are reserved for hardware interrupt. So all the peripherals should be connected to these pins so that they can communicate with microprocessor. Understood? So 5 hardware interrupts are there. Why we call hardware? Because it is physically present on the pins or as a pins of 8085 microprocessor. And we have another type of interrupt which is called software interrupt. Software interrupt means which is initiated by microprocessor itself. Okay, so an interrupt is a service subroutine called initiated by external devices. So when it is initiated by internal devices, it is called hardware interrupt, and when it is initiated by microprocessor itself, it is called software interrupt. तो जब भी interrupt होता है तो control कहाँ चला जाता है? It will transfer to this ISR, interrupt service routine. ISR is basically, अगर हम आगे इसमें करेंगे, it is basically 8 location program. 8 लोकेशंस रिजर्व होते हैं हर एक इंटरप्ट के लिए, जहाँ पे 8 लोकेशन वाला प्रोग्राम लिखा जाता है टू गिव सर्विस. तो ISR इज बेसिकली अ स्मॉल सबरूटीन. तो माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट क्यों चाहिए? फॉर कम्युनिकेशन विद दीज डिवाइसेस. ओके, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, व्हाई वी नीड इंटरप्ट. Interrupts are used by external peripheral for communication purpose, so that they can communicate with microprocessor. Otherwise, तो microprocessor अपना ही काम करता रहेगा. Okay, so hardware interrupt, basically we have 5 hardware interrupts in 8085 microprocessor. Okay, what are those 5 hardware interrupts? TRAP, RST 7.5, 6.5, 5.5 and INTR. These are 5 hardware interrupts or the 5 pins of 8085 microprocessor
microprocessor IC. Out of 40 pins, 5 pins are reserved for hardware interrupt. And what is software interrupt? Software interrupt is initiated by microprocessor itself. ठीक है, खुद अपने को रोकने के लिए माइक्रोप्रोसेसर, जैसे आपने कुछ प्रोग्राम लिखा, just like in your C++, for example, if you have written program, if you have done some wrong thing, then what will happen? Then error will display. It will not execute. Okay. ऐसे ही let's say calculator में, if you are dividing a number by 0, then some error will there. Means it will not perform that operation. So that processor has stopped itself. You know, you don't need to do that. Okay, so that is software interrupts are those interrupts which is initiated by microprocessor itself to stop itself for something wrong. If something is going wrong, if some program is wrong, if some illegal instruction is there, then it will not work. Okay, so this is why it is called software, because it is in the form of instruction. It is not available on the page. It is a part of your program. If you want to use in your program, अगर आपको कहीं पे कोई इंटरप्ट देना है तो आप उसको प्रोग्राम में एज अ इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं. अदरवाइज ये आपकी आपकी मर्जी पे है आपको ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यूज करने हैं कि नहीं करने हैं. But once it is there in your program, then you cannot stop it. Once you press the execution button, it has to execute. तो आप उसको रोक नहीं सकते. ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स को आप डिसेबल एनेबल कर सकते हो. आपको नहीं चाहिए तो आप अपने प्रोग्राम के टाइम उन्हें डिसेबल कर सकते हो. But software interrupt, it is a part of your program. Once you have written along with your instruction, program के instructions के साथ you have added this software interrupt, then once you press the execution button, it has to execute. Okay, so in 8085 we have how many software interrupts? We have 8 software interrupt from RST0 to RST7. RST stands for restart. तो RST0 to RST7. अब अभी हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर में, then you will see this interrupt. RST1 interrupt हम हर प्रोग्राम के एंड में लिखते हैं, just like your curly bracket in C++ to close your to end your program. Okay, same way we have two instruction, halt instruction and RST1. So that software interrupt I can use to stop my program temporarily. ठीक है, halt से क्या होता है कि रीसेट हो जाती है फिर, तो यू आर एबल टू सी द कंटेंट ऑफ address but not with the content of register. But if you stop your program with the help of this software interrupt RST1, then you will be able to see the content of your register. मतलब temporary terminate करता है माइक्रोप्रोसेसर को. बट अगर halt इंस्ट्रक्शन, एक HLT करके इंस्ट्रक्शन आगे हम करेंगे सेकेंड चैप्टर में, if you stop your program with the help of halt instruction, then it will reset or it will not show your all register content. It will show the contents of memory location but not register content. So because we need to write register contents also in our journal, तो हम normally RST1 यूज करते हैं. बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी इंस्ट्रक्शन थ्योरी एग्जाम में you can use either halt or RST1. You will get full marks. Understood? So software interrupts are the part of your program. It is not physically available. Just like your hardware interrupt, where we have 5 pins are reserved for hardware interrupt, where we can connect all the peripherals so that peripherals can communicate with microprocessor. So understood, hardware interrupt initiated by external peripheral, software interrupt initiated by microprocessor itself, right? Now the types of, अब जब हम इनके बारे में लिखते हैं तो 2-3 things we should know: their priority, their mask, whether they are maskable or non-maskable, and whether what is the vector addresses. अभी हमने बोला ना कि जब इंटरप्ट आता है तो it is moving to some ISR, its ISR. तो what is the address of that ISR? ठीक है ना, कहाँ प्रोग्राम काउंटर जंप करके जा रहा है. अगर कोई इंटरप्ट आया, लेट्स से RST 7.5 इंटरप्ट पेरिफेरल से आया, तो उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर
microprocessor will stop its work. Program counter के content stack में चले गए. But आगे program counter will get which address? So that is the address of ISR. So that is the vector address of that interrupt. So every interrupt has its own area, has its own 8 memory location. और उस 8 मेमोरी लोकेशन का जो फर्स्ट एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर को मिलता है एज अ स्टार्टिंग वेक्टर एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट. अंडरस्टूड. तो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स में हमारा एक INTR जो है सिर्फ टोटल अगर आप देखोगे तो यू हैव 5 हार्डवेयर इंटरप्ट एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. तो टोटल विल बी हैविंग 13 interrupts. Out of 13 interrupts, only one INTR is the interrupt which is not a vectored interrupt. उसका कुछ ISI नहीं है, but they have some special signal. वो हम आगे करेंगे. We will talk about the 3 things. Their priority. Priority means, what do you mean by priority? Priority means कि अब जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं 5 पिन्स है, तो एक पेरिफेरल मैंने RST 7.5 पिन पे लगाया हुआ है और एक पेरिफेरल ट्रैक पे लगाया है और दोनों ने एक साथ इंटरप्ट किया माइक्रो प्रोसेसर को. तो माइक्रो प्रोसेसर विल गिव सर्विस टू हूम? फर्स्ट किसको सर्विस देगा? ट्रैक को के 7.5 को. तो वी हैव सम प्रायोरिटी फॉर ईच इंटरप्ट. ओके. तो इंटरप्ट्स की जो प्रायोरिटी है, तो जिसकी हायर प्रायोरिटी है, इफ 2 or 3 interrupts are there simultaneously, hardware interrupt, then the priority wise microprocessor will give the service. तो अगर trap और RST 7.5 एक साथ आते हैं, since trap has highest priority, तो trap peripheral will get service from microprocessor first, and then RST 7.5 will keep independing. After giving service to trap, it will give the service to RST 7.5. So this way, the first concept is priority. Okay, कि किसकी कितनी प्रायोरिटी है. तो दिस इज द प्रायोरिटी. ट्रैप सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी हार्डवेयर इंटरप्ट में. ट्रैप हैज गॉट हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन 7.5 RST, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR. आप अगर पिन डायग्राम पे भी देखोगे 8085 के, तो यही लाइन से पिन नंबर्स हैं. ठीक है, ये आई थिंक पिन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से पिन नंबर्स पे इसी प्रायोरिटी और इसी लाइन से है. तो ट्रैप और कोई भी ट्रैप जो है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है. तो अगर कोई 2 या 3 पेरिफेरल एक साथ कम्युनिकेट और एक साथ इंटरप्ट करते हैं प्रोसेसर को, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी माइक्रोप्रोसेसर विल गिव सर्विस. अंडरस्टूड. एंड व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट? तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की आपस में कोई प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज सिंस दे आर इंस्ट्रक्शंस, राइट. तो जहां आप अपने प्रोग्राम में प्लेस करोगे, वहां पर अगर आपने RST 0, RST 1, RST 2, 0 पहले प्लेस किया, फिर 2 प्लेस किया, फिर 1 प्लेस किया, तो डिपेंडिंग ऑन देयर सीक्वेंस इट विल एग्जीक्यूट. तो देयर इज नो प्रायोरिटी अमंग देमसेल्फ. But software interrupts have higher priority than hardware interrupts. कि अगर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा एज कंपेयर टू हार्डवेयर इंटरप्ट. ओके. So this is a very important point. All software interrupts have higher priority than hardware interrupts. Okay. So this is about the priority. हार्डवेयर इंटरप्ट में आपस में प्रायोरिटी ये है. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में आपस में कोई प्रायोरिटी नहीं है, सिंस इट इज इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे भी आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इट विल एग्जीक्यूट. अंडरस्टूड. But all software interrupts have higher priority than hardware interrupt. Right? Now next concept related to this is vectored and non-vectored. Vectored or non-vectored means what is their address. So as I told you that we have total 13 interrupts, 5 hardware and 8 software interrupt. So out of 5 hardware interrupt, only 4 are, only one is there which is non-vectored interrupt. Vectored means which has direction as well as we can say that
has some address. In physics, it has direction and magnitude. But here in 85 microprocessor, if I'm saying it is vectored interrupt, then it has ISR address. तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है एमसीक्यू में, राइट द वेक्टर एड्रेस ऑफ ट्रैक, व्हाट इज द वेक्टर एड्रेस ऑफ RST3, देन यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट दैट. ओके, तो कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल फंडा इसमें ये है 8 into टाइप. Here, what is 8 into type? What is the type of interrupt? And you have to multiply by 8. So, जैसे अभी for example RST 7.5, it is 003C. It is given in hexadecimal. But how you are getting this? Up 7.5. This is type. You multiply with 8. So 8 into 7.5 कितना होगा? 8 5s are 40. And then 4 8 7s are 56 plus 4 60. 60 आ जाएगा, 60.0, राइट. ठीक है, तो 60 it is coming in decimal, but we want in hexadecimal. So how to convert 60 into hexadecimal? तो आपको वो conversion आता है hexadecimal method to convert decimal into hexadecimal. So how you will do that? You have to divide it by 16. तो 16 से जब divide करोगे तो क्या आएगा? 16 3s are 48. तो आप 3 यहाँ लिखेंगे as a quotient, and what is remainder? 12. ओके, what is remainder? 12. तो 12 का hexadecimal code क्या होता है? C. Okay, and while writing, what you have to write from top to bottom. So your answer is 3C. Your answer is 3C. Okay, since your address is what? Address is 4-bit, so it is 0003C. So this is your address. So this way you can calculate all the address, like 6.5 0034. तो 6.5 को अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे 8 into 5, 8 into 6.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 into 6.5, तो 8 5s are 44, 8 6 are 48 और 4 52.0, राइट. तो 52 का आप हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल मेथड. तो हेक्साडेसिमल मेथड से यू डिवाइड बाय 16. तो 16 क्या हो जाएगा? 3s are 48 और कितना रिमाइंडर बचेगा? 4. तो योर आंसर व्हाइल राइटिंग इट इज 3 4. Okay, so when it is 3 4, so this is 0 0. 4-digit एड्रेस बनाना है. तो ये आप देखते हो ये सारे एड्रेस रोम के हैं, राइट. तो जितने भी ISR है वो सब रोम में स्टोर है. क्लास में मैंने आपको बताया था कि वी हैव 2 एरियाज. हमारी टोटल मेमोरी कितनी है? 64 KB, राइट. तो 64 KB के एड्रेसेस क्या थे? 0002 FFFF. तो 000 to BFF, 00002 BFF, B एंड ट्रिपल F. ठीक है, ये जो एरिया है ये सारा एरिया किसका है? रोम का एरिया है. ओके, तो आप ये सारे एड्रेसेस देख रहे हो इसके अंदर आ रहे हैं इस रेंज में. और यूजर का एड्रेस कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम C002 लास्ट लोकेशन FFFF. ठीक है, तो ये सारे ISR आपके कहाँ स्टोर हैं? ROM में. So whenever there is an interrupt, program counter will get the address of ISR. It will execute ISR and again come back to its main program. So while moving from main program to ISR address, program counter will store its next executable address where in the stack memory. And after execution of ISR, it will take its main program address from stack memory and start execution from that place. That is the concept. ठीक है, इस तरह से आप सारे कैलकुलेट कर सकते हैं. ट्रैक का जो है एड्रेस, ट्रैक का एड्रेस जो है यहाँ पे 4.5 है.
आपको ट्रैप के लिए कैसे मिलेगा? व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 4.5 then you will get 0024h. Understood? So it is now clear. For software interrupt same way you can calculate for software interrupt. अभी RST 0 है तो 8 into 0 मतलब 0, तो फर्स्ट एड्रेस है 000, ठीक है। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन इज स्टोरिंग RST 0 इंटरप्ट एंड देन आप देख रहे हो हर एक एड्रेस के बाद 8 मेमोरी लोकेशन का गैप है। Why? Because it is 8 into 10. Understood? It is 8 into 10. So every ISR consists of 8 memory location. The subroutine or the interrupt service routine consists of 8 memory location. It will take 8 memory location to store its ISR. Right? Next, if you see RST1, in RST1, again you multiply by 8, so 8, you will get 8. And when you convert in hexadecimal, it will remain 8. 8 in hexadecimal and decimal are same. So your answer is 008. And what about RST2? RST2 is 2 into 8, 16. So 16 को if you convert in hexadecimal, you will get 10. So your address is 0010. तो कई बार आपको ये याद नहीं रहते, तो सिंपल फॉर्मूला, यू जस्ट मल्टीप्लाई द टाइप, जो नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो एंड देन you will get answer in decimal and you have to convert it into hexadecimal or using hexadecimal method. और hexadecimal method आपको आता ही है, 16 से डिवाइड करते जाओ and if any question or remainder is greater than 9 then you have to use alphabet, like for 10 it is A, 11 for B, C for 12 for C, like that. I hope it is clear. So vectored and non-vectored interrupt. Now what about that then INTR? हार्डवेयर का जो INTR है उसको फिर कैसे माइक्रोप्रोसेसर काम करता है उसके लिए, तो आपको अब जब when we will do next topic, तो after this 5 हार्डवेयर जो इंटरप्ट है उसका जो नेक्स्ट पिन ही आप देखोगे ना, यहाँ पर नेक्स्ट पिन है INTA बार. We have next pin which is called INTA bar. इसके बाद ही आप 11th पिन आई थिंक देती है INTA interrupt acknowledgement and bar is there. कई सिग्नल्स जो है बार के साथ है, बार मतलब इट इज एक्टिव लो सिग्नल. See, these all are active high. Active high signals कौन से होते हैं कि जब when you give one, then they will activate. But कुछ सिग्नल्स इसमें 2-3 सिग्नल हैं 8085 में जो एक्टिव लो हैं. When they are active, when you give 0, that's why it is called active low. Why we need active low signal? बहुत सारे जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग होती है या बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की डिजाइनिंग होती है, तो कहीं बार हमें सर्किट को इजी बनाने के लिए, डिजाइनिंग इजी करने के लिए या ट्रैक्स को मूव करने के लिए वी नीड टू रिवर्स सिग्नल. ओके, तो कई सिग्नल हमारे एक्टिव लो लेते हैं तो थोड़ा डिजाइनिंग जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है. तो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल भी कौन सा सिग्नल है? एक्टिव लो. बोर्ड में आपको पहली लाइन यही लिखनी पड़ेगी इन सब 2-3 जो ऐसे सिग्नल्स हैं कि दिस इज एक्टिव लो सिग्नल. एक्टिव हाई के लिए भले ही मत लिखो, बट जो बार वाले सिग्नल हैं IOM बार है, रीसेट इन बार है, इंटरप्ट एक्नॉलेज बार है, फॉर दोज यू हैव टू राइट दिस इज एक्टिव लो सिग्नल. तो ये किस लिए सिग्नल है? दिस इज the signal which is generated by microprocessor. अब किसी पेरिफेरल ने यहाँ पर इंटरप्ट किया इस पिन पे, तो माइक्रोप्रोसेसर जब वो अपना काम कर रहा होगा, it will stop its work and it will send this acknowledgement signal to this peripheral that I have received your signal, let me finish my work and after that I give you service by giving this signal. तो ये out signal है from microprocessor. This is out signal from microprocessor.
माइक्रोप्रोसेसर, कुछ सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर को जा रहे हैं, कुछ सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर से आ रहे हैं। तो ये सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर से आता है जब यहाँ पे कोई पेरिफेरल इस इंटरप्ट सिग्नल पे इंटरप्ट करता है इस पिन पे, then microprocessor will acknowledge by giving or by sending this signal to that peripheral that I have received your signal। तो जो भी वो काम कर रहा है, या अगर उससे कोई हाई प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट पेंडिंग भी नहीं है, तो उसको फिनिश करने के बाद उसको लेगा, बिकॉज इट हैज गॉट लोएस्ट प्रायोरिटी। ओके, so this is the only interrupt which is non-vector। ओके, 13 इंटरप्ट्स में से सिर्फ INTR is the interrupt which is non-vector। तो अगर कभी एक्सप्लेन के लिए पिन आती है INTR या INTA बार, दोनों के लिए आपको दोनों पिन एक साथ ही एक्सप्लेन करेंगे। अगर INTR आया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पिन्स आते हैं कोई 3 पिन्स, तो इफ इट इज देयर INTR एक्सप्लेनेशन के लिए, then along with INTR you explain about acknowledgement signal also, because both are connected। आप INTR एक्सप्लेन कर रहे हो तो माइक्रोप्रोसेसर को आपको बताना ही होगा कि हाउ इट इज गेटिंग the service of microprocessor by sending acknowledgement signal from microprocessor। So this explanation should be there along with INTR, and if it is there, INTA bar is there in your exam, then you have to start with INTR कि ये किसके रेफरेंस पे चलता है, ये किसको एक्नॉलेज करता है, INTR। Understood? So this is about uh, vectored and non-vector concept, right? Then next is maskable and non-maskable interrupt। Maskable interrupts कौन से होते हैं, which we can disable। Maskable interrupts which we can disable, और non-maskable interrupt which we cannot disable, right? तो हार्डवेयर इंटरप्ट में सिर्फ ट्रैप ही है which is non-maskable, मीन्स आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते थ्रू सॉफ्टवेयर और थ्रू इंस्ट्रक्शन, वो रहेगा ही रहेगा। बट बाकी इंटरप्ट्स RSC 7.5, 6.5, 5.5, these three you can disable। what these three, 7.5, 6.5 and RST 5.5, these you can disable with the help of enable interrupt, disable interrupt, rin same instructions के थ्रू हम इन पे काम कर सकते हैं, इन्हें डिसेबल कर सकते हैं। कि अगर मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ एंड आई डोंट वांट एनी disturbance from external peripheral, then I can disable this interrupt। And INTR also, if I am doing important work, then microprocessor will not send acknowledgement signal to that interrupt। So that's why these are all depends on microprocessor। हम microprocessor को control कर सकते हैं कि we don't want any interrupt from peripheral side, right? But trap is the only one which is always in non-maskable form। Non-maskable form means कि आप उसको डिसेबल कर ही नहीं सकते। वाई वी नीड दैट, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे फायर अलार्म। अगर आग लग गई तो क्या आप अपना काम ही करते रहेंगे? अगर इस तरह का पेरिफेरल हम कनेक्ट करते हैं तो वी कांट डिसेबल दैट। ओके, हम उनको डिसेबल नहीं कर सकते, उनकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहेगी और वो नॉन मास्केबल रहेंगे। आप उसको सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें बहुत सेंसिटिव पेरिफेरल्स लगाते हैं कि अगर उन्होंने इंटरप्ट किया है तो फर्स्ट उनको प्रायोरिटी सब काम छोड़ के प्रोसेसर दे। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर। If you have any doubt, you can ask, and you can join again। अभी join